So now today I'm going to ask you, although I'm not going to start that part because that is very easy. I hope you have already covered that list. So my first question is that are you aware with that? What is list? LIST list. Yes, sir. So what is that exactly? So list is like a container. We can add any um, values, Hmm. and we can update that. Hmm. Okay, good. So now what you will do after this class, you'll go for the definition part of list, right? And then a simple program to create a list in Python. If you find any difficulty, of course, I'm going to show you, but not today because today I thought that list, because we already covered array and I thought that list is skipped at that time. So, but if you find it easy, then I'm not going to start that, but still you'll go through at least one program on list. Okay. And you let me know about that. Yes, sir. And I think the fifth sem students, are you there in this lecture? Yes, Hello. sir. Please ask all of your classmates to join right now, as Manoj sir is not there, and I have a class in the I mean after the lunch period. So you ask all of your classmates to join now. Okay, I'll give different assignment at the time, but now this class will be important for all of you. Okay, ask all of your classmates to join immediately. So what today we are going to talk about is GUI. How many of you are aware with this term GUI? I'm asking to all of you, not just the fifth sem and seventh sem, both of you. GUI stands for graphical user interface. Is it right? Yes, sir. Yes, sir. तो suppose आप लोगों को, जैसे मैंने भी कोई बार आप लोगों को ये दिया हो कि एग्जाम टेस्ट, तो वहां पे मैं कुछ ऑप्शंस दे देता हूँ, आप लोग भरते हो, राइट? जैसे कि सपोज एमसीक्यू फॉर्म में दे दिया कुछ टाइप्स, कभी कभी आपका इस टाइप का रहता है, कभी कभी इस टाइप का रहता है, राइट? तो let's see this one. Say this is, assume it as a calculator. You type 1, then plus symbol is there, and 2, then 1 plus 2, 3 will be printed here. Okay. Similarly, suppose you want to input some numbers, and you can do it two-way, either the product from the console part, that is okay, but GUI makes everything look easy for everyone. Am I right or wrong? When it is GUI, then it is easy for everyone. Yes? बुझी पाया ऐसा Yes, सवाल sir. लोगे? क्योंकि देखिए, यस, तो आप लोगों के सामने, यू आर आईटी स्टूडेंट्स, यू आर आईटी पीपल्स, you know how to deal with the control part, but when it is the case of a common people, they may find it difficult to deal with the GUI part. Oh, sorry, means console part. I'm really sorry. Console part के साथ उसको deal करने में थोड़ा problem आ सकते हैं. But जब GUI देखेगा कोई भी उसमें, जब उनको ये दिख जाएगा कि ये बटन है, राइट, और ये ऑप्शन है, ये आपका कैनवास है, तो ये सारे चीजों के साथ anyone can deal with them because they look easy, and also to deal with them is very easy. Now that everything is a part of GUI, graphical user interface. Mind the term graphical. Okay, I hope you already gone through the paper computer graphics. If I am not wrong, computer graphics paper सभी जन पढ़ चुके हो अभी तक के? No, sir. You have not yet got it. Okay, but my suggestion, go through that paper because many questions actually that computer graphics papers, many things are mathematics, geometry are there, and many theorems are there. So that will help you to grab good marks in net, use net or that GATE exam, because uh,
you will obviously find 2 or 3 questions from the computer graphics part. Even you can ask Amlan Shah to teach this computer graphics because he basically teach computer graphics and computer program, ये computer network. Okay, क्लास में बोल देना कि ये Yes, sir. चीजों को दिखा दे कंप्यूटर ग्राफिक्स तो पढ़ा देंगे. तो GUI एक important part है, ये आपको समझ में आ गया. Now how to do those GUI programming using Python? This is our main concern now. हम GUI programming कैसे करेंगे with the help of Python? I'm starting from the very basic. So both of you means both the students of the 5th and 7th sense are not going to find any difficulty. So we have one thing that is known as this one, TKINTER. How you pronounce it? कैसे pronounce करोगे इसको? ठीक है, enter. TKINTER. और बाकी लोग भी बोलो. How you will pronounce this one? All of you. TK. ভাগ্যশ্ৰী তুমি কোৱা কেনেকৈ pronounce কৰিবা? TK-Inter. TKINTER. Okay. TK-Inter. TKINTER. Okay. Then Krishnangi. Sir, TK-Inter. Okay. Sanchita. Yes, sir. How you pronounce it? Kinder. Okay. Trisha. Kinder, sir. Okay. Arunav. So TK-Inter. অৰুণাভ তুমি ক্লাছৰ নিজৰ ক্লাছৰ ষ্টুডেণ্ট খিনিক ক'লা না জয়েন কৰিবলৈ ক্লাছমেটছ খিনিক উইতে জয়েন কৰিব কৈ দিয়া নহলে I am going to take the attendance from this class itself, okay, and I am going to send this to both. Okay, but if they are thinking about to join in the after the lunch period, then that will not be available. Okay, so this is the only class from where we are collecting the attendance, so please ask them. और 2-3 मैसेज ग्रुप में दे दो, ठीक है, ज्वाइन करने के लिए बोल दो, जो जो मैंने बोला है अभी बोल दो वहां पे. So why I have asked all of you to pronounce this? There is a reason behind this, because whenever you go for GUI programming, this is the main part you are going to use in every program. So you should remember this particular keyword, TKINTER. Okay, TKINTER के जरिए ही आप कोई भी GUI प्रोग्रामिंग करने जा रहे हो, you have to import that. So what is TKINTER? This is a module. Okay, module माने की module क्या है? कुछ भी आप प्रोग्रामिंग करते हो तो आपने C++ में देखा, you have seen in C++, you have seen in Java, okay, even in Python. So we have some predefined functions, right? We have predefined functions and many keywords are there. We are importing from those things and we are keeping them in particular library module. Okay, so TKINTER is one such library or one such module from which we are going to import those things which will be needed for our GUI programming. বুঝি পালা? Now, to create a GUI using TKINTER, you need to follow a few steps like importing this module. This is the very important part. Then create the main window. That is the container part. See, remember the terms. When I'm saying that create the main window, I'm using the term what? Keywords here, container. Okay. Why I'm using this? Because this is the main window where other parts will be there, like button, list. Okay, everything will be there. So that's why I'm using the term container here. Now, in this container, you can add any number of this type of widgets. And after that, you are going to apply the event trigger on this widgets according to your or as per your requirements rises. Got it?
So repeating these things, first you are importing this model, tkinter, then you are creating the main window, that is the container for us, and there you can use add any number of these widgets, like as per your requirements, you can add these things, and after that you have to apply the event trigger. Okay, steps की नहीं बुझी पाला, समझ में आ गया steps? या किसी को भी समझ में नहीं आया? Give students, please give the yes. responses. Yeah, thank you. Now, we have different versions of Python. So आजकल तो हम directly use करते हैं this one. Okay, previously they used this one, only this capital T and small t, this matters. Now, import this tkinter. There are two methods, or you can say two main methods used for creating this GUI, and the typical one will have this particular structure. मैं अगर आप लोगों को पूछ दूं कि ये जो दिख रहा है आप लोगों को TK screen name node, ये किस टाइप का दिख रहा है? What is this exactly? In programming languages, what term we use to denote these things? Come on, you have already gone through many different languages. Java, Python, 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 C, Python. So ये particular ये line to कमी क्यों लिखो? This particular line क्या बोलते हैं इसको राजेश? बाकी किसी से तो रेस्पॉन्स मिल नहीं रहा है, आप ही बता दो. What is this? So assignment. मैं पूरा इस पर्टिकुलर चीज की बात, अगर ये सच में आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे हो ना, दैट इज वेरी रॉन्ग थिंग. ठीक है, प्रोग्रामिंग इज द मेन पार्ट, राइट? अगर प्रोग्रामिंग नहीं, इफ वी स्किप एनी प्रोग्रामिंग, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द पाइथन, ये सभी में हम यूज करते हैं. इसको क्या बोलते हैं इस पर्टिकुलर लाइन को? क्या कर रहा हूं एक्चुअली, व्हाट आई एम डूइंग हियर? Sir, condition. Okay, আৰু অলপ চেষ্টা কৰা. Marks, Gaurav, Krishnangi, Sanchita, Trisha, Krishnangi, তোমালোকে কোৱা. What is this? सर वैल्यू असाइनिंग कर रहे हैं, जैसे स्क्रीन नेम नन है तो कुछ दे नहीं रहे हैं, और क्लास नेम टीके दे रहे हैं. कुछ पैरामीटर नाम की कुछ चीज था क्या? यस सर. हाँ, कुछ फंक्शन नाम के कुछ चीज था क्या प्रोग्रामिंग में? यस सर. तो फिर वो सब कहाँ गया? Where are those terms now? इंटरव्यू में आपको इस टाइप का ही क्वेश्चन देंगे, बिलीव मी. आप लोग चाहे जमीन आसमान कुछ भी पढ़ लो, क्लाउड कंप्यूटिंग का कहीं भी कुछ भी चले जाओ, बट of course you are going to fail if you don't know these things. You know these things but you are ignoring these things. So मैं इसलिए आप लोगों को बेसिक से पूछ रहा हूँ. ठीक है, आप समझ में आया? हमने बहुत सारे चीज प्रोग्रामिंग अभी तक कर लिया. इन माय क्लास इटसेल्फ, इन द पाइथन दिस ITW क्लास, बहुत सारे तो प्रोग्राम किया. एम आई राइट राजेश? यस सर. तो कहाँ गया वो सब? इसीलिए प्लीज, तो ये ऑफ कोर्स दिस पैरामीटर्स, ये फंक्शन है ना, ठीक है, उसमें हम कुछ वैल्यूज असाइन कर रहे हैं कि नहीं? जैसे कि लाइक स्क्रीन नेम नॉन, मतलब क्या असाइन किया हूं? नॉन को स्क्रीन नेम नाम के जो पैरामीटर है, वी आर असाइनिंग दिस नॉन वैल्यू टू दैट स्क्रीन नेम. सिमिलरली नॉन टू द पैरामीटर बेस नेम, देन tk is the class name, then use tk1. All these things are being assigned to that respective parameters. To create a main window, tkinter offers a method, this one, okay, we call it method and function, the same thing. So with this parameter, to change the name of the window, you can change the class name to the desired one. जैसे हमने क्या यूज किया है अभी? Can you tell me what is the class name we are using here by looking at this? ठीक. Very good. ठीक है, the same response I want from all of you. Kindly concentrate, okay? So
TK of course, but ये TK को आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे कि मैं दे दिया suppose my GUI 1, so you can assign your own class name here. Now the basic code used to create the main window of the application is what? The मैंने ये assign कर लिया, तो tkinter.tk, where m is the name of the main window object. Remember, I think in your other programming classes also, you have been told, you have been actually shown the use of main method. You know that main part of the method or main method. जानते हो ना ये सब चीज? Yes, sir. तो यहाँ भी very good. हम क्या कर रहे हैं? m is equal to tkinter.tk, right? And here m is nothing but our main window object. Then there is a loop, main loop. And I know that what is loop, I don't need to explain. You know that what does it mean by loop. So main loop is there. This is a method known by this name, main loop. This is used when your application is ready to run. Okay, main loop हम use करेंगे when our application is ready to run, and main loop will be an infinite loop used to run the application, and it will wait for an, I already told you this is trigger or event driven programming. Okay, so this will wait for an event to occur and process the event as long as the window is not closed. मतलब एक विंडो खुल गया, विंडो आप लोग जानते हो टिपिकल विंडो इस टाइप का दिखता है ना, Yes, sir. है ना, ये मिनिमाइज, ये आपका मैक्सिमाइज एंड क्लोज. अरे बाकी सबको भी दिखाई दे रहा है कि नहीं? कैन यू सी दिस स्क्रीन और नॉट? Yes, sir. तो म्यूट मत रहिए प्लीज. कुछ बोल दिए, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों को, और एक प्रोग्रामिंग दिखा दूंगा, बट जो दिखा रहा हूँ उसमें प्लीज रेस्पॉन्स दीजिए, ठीक है? इंपॉर्टेंट है सबके लिए. तो ये एक, दिस इज अ विंडो. यस, सभी ने आप लोगों के पीसी में देखा होगा कि ये माया मिनिमाइज, दिस इज मैक्सिमाइज, दिस इज क्लोज. अब जो ये आपको दिखाई दे रहा है, दिस मिनिमाइज and this is maximize and this is close. If you click them, one event will be generated for each. Like this is minimizing event, this is maximizing, this is close. तो ये जो main loop है, क्वेश्चन आ सकता है ये किस टाइप का लूप है? This is an infinite loop. मतलब ये है when you will not check or when you will not click any one of these, then it will be running for infinite time. It will be closed only when you will click them. So is it okay? So question. Yes, sir. Okay, good. Question may be Yes. coming that main loop is finite loop or infinite loop. So answer will be infinite loop. Very good. See, ये typical programming इस type का दिखेगा. Import tkinter. Okay, m is equal to tkinter tk. अभी मैंने बताया क्यों यूज कर रहा हूं मैं. Can you tell me why I'm using this line? tkinter.tk being assigned to m For means what? main window. मेन ऑब्जेक्ट इवेंट. ओके, यहाँ पे क्या है, हमारा मेन चीज विंडो है, उसको हम क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है? देन ये जो लिखा हूं मैं, दिस इज एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स, वी विल ऐड आवर ओन व्हिच इज देन m.main loop. Okay, so if it is graphics, you know, in graphics, I already told you in the case of computer graphics, a lot of geometrical things are there. Of course, we need geometry or geometrical, those configurations for geometry, means geometrical based programming like your game. Gaming क्या है? Game में आप कोई भी object देखते हो, तो वो क्या है exactly? This is something none other than graphics. Like आपने एक सपोज क्यूब देखा, तो वो उसको पहले आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है? अब मैं गेम प्रोग्रामिंग ये सब में नहीं जाऊंगा, बट दिस इज बेसिकली पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर ग्राफिक्स. So there are mainly 3 geometry manager classes we have in our tkinter, that is pack, that is grid, and that is place. So pack method organizes the widgets in blocks before placing in the parent widget, and that grid organizes the widgets in grid. Grid means what? This type of things are known as grid.
Okay, table-like structure. Then place method means it organizes the widgets by placing them on specific position directed by the program. So pack, create, place. These are used for geometric configuration. मैं repeat कर रहा हूँ फिर से. Pack हम किस लिए use कर रहे हैं? It organizes widgets in blocks before placing in the parent widgets. Blocks में, ठीक है, organize कर रहे हैं हम. Grid for grid-like structure. Then place means it organizes the widgets by placing them on that particular position we specify. We means the programmer specify. तो याद रहेगा ना, pack, create, place. Now let's come to one important widget that is known as button. Can anybody tell me that what do you mean by button in your programming or in anywhere? What does it mean by button? So by clicking that object, some event is occur. Okay. बटन किस टाइप का दिखते हैं? So there are many types: radio button and check button. Right. So very good, Rajesh. So button is an important widget. As Rajesh said, we have different types of it, and this means that this is very important for our GUI programming. So the first program we are going to consider is button. To include button in our GUI. To add a button, what will be the syntax? The syntax is this one. W is equal to button, master, option, value. Okay, what is master? Master is the parameter that we use to represent our parent window. And other options also we can use here, like active background, active foreground. We are not going into the depth of them in this class. We'll of course go in our coming classes. Then BG to set normal background color, then command to call a function, then font, image, width, height. Okay, from the name itself, font is to change or deal with the font part. Image, if you want to set image on the button, क्योंकि बटन में भी आप चाहते हो कि आपका इमेज बटन में दिखाई दे. ये राजेश का बटन है, राजेश का नहीं लेता हूँ, सपोज हिमांशु का बटन है, तो यहाँ पे हिमांशु दिखाई दे रहा है. ऐसा कर सकते हो आप लोग? यस और नो? ठीक है, तो these things also you can do. You can play with the buttons because there are different other options we have in button. Okay, so let's come to the first program. Can you see the program here? Import tkinter as tk. मैं एक एक लाइन पे फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 5th सेम का भी स्टूडेंट है. Import tkinter as tk मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, tkinter जो मॉड्यूल है उसका एक पार्टिकुलर इंस्टेंस इंपोर्ट कर रहा हूँ. I means importing one particular instance of this tkinter and that instance I am naming it as tk. आप कुछ भी दे सकते हो, आप दे सकते हो tk1, tk2. You can give any one as per your choice. Is it clear? Now coming to the next thing, that r is equal to tk.tk. या अभी मैंने बोला था आप लोगों को. Can anybody tell me मैं क्या कर रहा हूँ इस लाइन से? ये सेकेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ मेन So creating a main window. वेरी गुड. ओके, उसका नाम क्या दिया हूं मैंने यहाँ? r. राइट, ठीक है, उसमें असाइन कर दिया. देन r डॉट टाइटल, इसका नाम मैंने दे दिया क्या? टाइटल दे दिया काउंटिंग सेकेंड्स. Now मेरा widget जो है, what widget I want to include here, I want to add here is button. Now, so tk is our main window. tk main window है मतलब क्या था? tk means container. Am I right? So main window को ही हम क्या बोलते हैं? Container. और container के अंदर आप जितना सा है widgets you can keep as your choice. So tk dot button. आप समझ में आ गया? बटन एक फंक्शन है, राइट? इसमें पैरामीटर्स हम रख रहे हैं जैसे कि r क्या है? इस मेन विंडो का नाम. इसमें टेक्स्ट मैंने रख दिया स्टॉप. विड्थ कितना रखा है? 25. एंड देन कमांड r डॉट डिस्ट्रॉय मींस क्लोज बटन में आप क्लिक कर दोगे तो क्या हो जाएगा? दैट पर्टिकुलर बटन विल बी टर्मिनेटेड. ओके, देन पैक, बटन डॉट पैक. रिमेंबर
I have told you 3 functions: pack, greet, place. Now I am using which one? Pack. Okay. So pack means what? We are keeping this thing in block. বুজি পাইছা? ব্লক যেনেকে গ্ৰিড মানে কি হয়, গ্ৰিড লাইক স্ট্ৰাকচাৰ, প্লেস মানে যিটো জেগাত তুমি থব বিচাৰিছা, the particular place you want to place, you keep your particular widgets, you may specify the place method. Now we are using pack. Then r dot main loop means this thing will be continued until you will click that close button. So each line of this statement, this program is clear to everybody? Yes, sir. Okay. Now I'm going to implement this. Just a minute. So can you see my screen now? Yes, sir. Okay. So as always, you need to open your Python GUI. Like I'm using here, Spider. You can find it in Anaconda. You can use the one you'd like to dilute. So make क्या use कर रहा हूँ? Spider. So each line I have already illustrated. I'm repeating it again. Import tkinter as tk. So what was tkinter? Come on, quickly answer these things. Tkinter क्या था? This is a model where we have a lot of functions that will be needed for GUI programming, right? बुझी पाला? Then what is tk? tk क्या है यहाँ पे? Come on, the new students also, 5th semester students also, you can answer these questions. What is tk? So it is alias name. Alias name, of course, because this is a particular instance I am using, and that is representing what? Tkinter, that module. Okay, but next time I am going to use tk for tkinter. Now next thing, r is equal to tk.tk. What I am doing with this particular statement? इस स्टेटमेंट से मैं क्या कर रहा था? अभी थोड़ी देर पहले राजेश ने भी बताया था क्या कर रहा था? We are defining our main window. Okay, we are initializing it. So main window हम define कर रहे हैं. What is the name of that? R. Okay. Then next statement, r dot title counting seconds. What I am doing here? I'm giving the title of that main window as counting seconds. The next thing I'm doing is I'm adding one widget here, and that is button, tk.button. R is means our main window, text stop, which you may specify your own with command r.destroy. Means whenever you click the close button, then it will be destroyed. Then button.pack, because I am working in the blockwise. Then r.main loop, this means this particular statement, this particular button will be continuously running till you will click the close. Okay, close option. Every statement clear to all of you? Statement of this program, is it clear to all of you? Yes, sir. Okay, very good. So let's run this. Run करने के लिए मैं क्या किया? ये जो particular green button दिख रहा है आपको, उसमें click किया. Otherwise I can go line by line statement execution with this particular symbol. Just a minute. ये दिख रहा है आपको? Can you see this? Counting seconds. Yes, sir. दिख रहा है यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा है माइनस मैक्सिमाइज. तो GUI प्रोग्रामिंग में हमारा मेन काम यही है कि कुछ इस टाइप का विंडोज डिफाइन करना. और ये हमारा क्या है? ये जो दिख रहा है पार्टिकुलर सीज, ओके. सो दिस इज आवर मेन कंटेनर. ये मेरा मेन विंडो है और इसके अंदर आप क्या यूज कर रहे हो? ये फॉर दिस प्रोग्राम यू आर यूजिंग बटन. और बटन को क्या बोल रहा हूं मैं? दिस इज ए वन widget that I have added to this main container और main window. और main window का नेम जो था मैंने पहले डिफाइन कर दिया था, काउंटिंग सेकेंड, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है. यस. और यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? ये आपका स्टॉप. देखो मैंने स्टॉप में क्लिक किया तो क्या हो गया? दैट इज डिस्ट्रॉयड. यस और नो? समझ में आया? फिर से मैं रन करके बता देता हूँ. ये आ गया.
ये दिखाई दे रहा है? अब मैं इसमें सब बोलो तो जरा कि समझ में आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है सबको? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ये स्टॉप दिख रहा है, ये स्टॉप बटन है। मैंने स्टॉप बटन में क्या डिफाइन करके रखा है? फंक्शन क्या है यहाँ पर? कमांड इज इक्वल टू r.destroy। मतलब मैं यूं ही मैं स्टॉप बटन में क्लिक करूंगा, व्हेन आई विल क्लिक द स्टॉप बटन, देन व्हाट विल हैपन? दिस पार्टिकुलर विंडो विल बी destroyed। मतलब जो ये मेन लूप है उसमें मैंने इवेंट ट्रिगर कर दिया, और ये इवेंट क्या है? यूं ही जब आप बटन में स्टॉप बटन में क्लिक किया तो ये इवेंट आ गया कि इसको डिस्ट्रॉय करना है। देखना, पीछे देखना, स्टॉप पे क्लिक किया और ये गायब। दिस इज टर्मिनेटेड। Okay, I think this much of explanation is okay for understanding this program. If it is clear to everybody, I can stop right here. I can take the attendance. क्लियर सर। Okay, Yes, so sir. very good. तो do one thing, तुम लोग क्या करोगे? आप लोग क्या करोगे? ये जो, और आज बहुत सारा प्रोग्राम करने की कोई जरूरत नहीं, तो लिस्ट का जो प्रोग्राम मैंने बनाने के लिए बोला था वो बनाना, और सेकंड ये वाला अभी आप एक स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। इसमें इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना। पहले तो ये ओरिजिनल बनाना, उसके बाद विथ स्टैंड करना, ठीक है। उसके बाद जो मैंने पैक फंक्शन यूज किया है, आप पैक फंक्शन की जगह पे मैंने और दो दिखाया था, क्या उसको मैं यूज कर सकता हूँ या नहीं, ये आप लोग खुद करके मुझे दिखाओगे। So that's all for today. Thank you.